हाय फ्रेंड्स मैं मधु आज एक नया वीडियो को आपने भल थे कि पॉलिटी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा विथ MCQ ओके जोटा कि अपकमिंग आपंकर होगा OSSC होगा ये सब एग्जामिनेशन बहुत बहुत हेल्पफुल करता है। ओके तो चलतु लेट न कर वीडियो स्टार्ट करवा। सो देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन देला हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। तो एम मध्य करेक्ट आंसरटा कौन ना कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द इंडियन स्टेट रो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवर्नर। तो एम मध्य करेक्ट आंसर हो कौन प्रेसिडेंट। ओके प्रेसिडेंट हूँ करेक्ट देन आम देखा क्वेश्चन देला तो एम मध्य करेक्ट आंसरटा कौन करेक्ट आंसर हो फ्रेंड्स 42 अमेंडमेंट। ओके 42 अमेंडमेंट देन हम देखा व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश अनटचेबिलिटी। तो अबॉलिश आर्टिकल 17। ओके आर्टिकल 17 हूँ आमर करेक्ट आंसर। देखा क्वेश्चन देला द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इज बोरो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री। कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट को कंट्री तो बोरो करा जायछि एमानक मध्य करेक्ट आंसरटा कौन ना करेक्ट आंसर हूँ आमर USA। ओके USA रो आमर फंडामेंटल राइटटा बोरो। ओके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन इन पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP टा हूँ आयरलैंड रू बोरो करा जायतिला। तो DPSP हूँ IB रे मेंशन करा जायछि। ओके फंडामेंटल राइट हूँ पार्ट 3 रे मेंशन करा जायछि आ फंडामेंटल ड्यूटीज सेटा हूँ पार्ट IBA रे मेंशन करा जायछि। तो एमान को मध्य करेक्ट आंसरटा हो कौन ना आमर पार्ट देन हम देखा व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ पंचायत राज सिस्टम। पंचायत राज सिस्टम हूँ कौ शेड्यूलटा डील करुच्ची। तो पंचायत राज सिस्टम हूँ आमर शेड्यूल 11 आमर डील करुच्ची ऑप्शन सी हूँ आमर करेक्ट हो। सेमती म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनटा आमर कोटा डील करुच्ची शेड्यूल 12 आमर डील करुच्ची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आमर शेड्यूल 10 टा कौन सेटा हूँ एंटी डिफेक्शन लॉ आउ लैंड रेवेन्यू सिस्टम आउ शेड्यूल हूँ यूनियन ऑफ स्टेट संपर्क में मेंशन कर दिया जायछि। आउ शेड्यूल 2 रे कौन शेड्यूल 2 रे हूँ आमर राष्ट्रपति किंबा सुप्रीम कोर्ट रो जज से कर दिया जायछि शेड्यूल 2 रे। आउ शेड्यूल 3 रे कौन शेड्यूल 3 रे हूँ राष्ट्रपति मानकर शपथ पाठ संपर्क में मेंशन कर दिया जायछि। आउ शेड्यूल 4 रे कौन क्यों राज्य रू केते जन मेंबर जिबे ता लोक राज्यसभा को ता संपर्क में मेंशन कर दिया जायछि। आउ शेड्यूल 4 रे कौन शेड्यूल ईस्ट मेंशन कर दिया जायछि आसाम मिजोराम होगला ए मानकर स्टेट मानकर संपर्क में मेंशन कर दिया जायछि। सेमती शेड्यूल 7 रे हूँ स्टेट पावर आउ बहुत हूँ कन्करेंट लिस्ट सेटा आमर शेड्यूल 7 रे मेंशन कर दिया जायछि। आउ शेड्यूल 8 रे कौन शेड्यूल 8 रे हूँ लैंग्वेज संपर्क में मेंशन कर दिया जायछि। आउ शेड्यूल 9 रे हूँ लैंड रेवेन्यू सिस्टम कोटे दिया जायछि ता संपर्क में मेंशन कर दिया जायछि। आउ शेड्यूल 10 रे हूँ एंटी डिफेक्शन लॉ ता संपर्क में मेंशन कर शेड्यूल 12 रे हूँ आमर सेटा आमर म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन ता संपर्क में मेंशन कर दिया जायछि सेटा हूँ पार्ट IXA रे मेंशन कर दिया जायछि। देन हम देखिबा हां द 70 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू 73 टा हमर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोटा सहित डील करूची सेटा हूँ हमर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन म्युनिसिपालिटी संपर्क में कहीता सेटा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील करूची। तो एमान मध्य करेक्ट आंसर हूँ हमर कौन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन ऑप्शन बी हूँ हमर करेक्ट आंसर हो। ओके एंटी डिफेक्शन लॉ जदि पचारे सेटा हूँ शेड्यूल 10 रे मेंशन कर दिया जायछि। ओके फंडामेंटल ड्यूटीज होची सेटा होची पार्ट IBA
रे मेंशन कर दिया जायछि 3 रे मेंशन कर दिया जायछि हां अंडर व्हिच आर्टिकल कैन द नेशनल इमरजेंसी के आर्टिकल रे डिक्लेयर करा जाय हमर इमरजेंसी केतरा रही इमरजेंसी 3टा रही गोटे 352 356 आउ 360 तो एटारे पचारिछि नेशनल इमरजेंसी 352 आर्टिकल मेंशन कर दिया जायछि आउ 356 अच्छी सेटा हूँ आम स्टेट इमरजेंसी संपर्क में मेंशन कर दिया जायछि आउ आर्टिकल 360 होची सेटा होची फाइनेंशियल इमरजेंसी संपर्क में मेंशन कर दिया जायछि ओके एमान को मध्य करेक्ट आंसर टाइ जिबा हमर कोन सेटा होची हमर 352 होची हमर करेक्ट आंसर रे जिवो ऑप्शन देन हम देखिबो फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 3 has been imposed in India how many time तो केते तरह फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज करा जायतिला इंडिया रे सेटा होची हमरो नेवर ओके नेवर होची हमरो करेक्ट आंसर कोटा न ओके तो हमर इमरजेंसी केते तर लागितिला 3 तर लागितिला इंडिया रे ओके 1962 रे गोटे और 1971 रे गोटे और 1975 रे गोटे ओके देन हम देखिबा क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन देला टू अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया रो का द्वारा अपॉइंट करा जाता है तो सेटा होची हमर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट करा जाता है ऑप्शन सी होची हमर करेक्ट आंसर देन हम देखिबा व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा रो मेंबर होबा पई मिनिमम एज केते रिक्वायर्ड करिताय सेटा होची 25 इयर्स जदि राज्यसभा रो मेंबर होबा पई सेटा होची 30 इयर्स ओके तो एमान को मतिर करेक्ट आंसर एज हमर 25 इयर्स ऑप्शन बी होची हमर करेक्ट आंसर is the minimum age required to become the president of India तो इंडिया रो प्रेसिडेंट हेबा पई केते मिनिमम एज रिक्वायर्ड होता है सेटा होची हमर केते 35 इयर्स ओके प्रेसिडेंट हेगला किबा वाइस प्रेसिडेंट हेगला गवर्नर हेगला एमानकर 35 इयर्स रिक्वायर्ड है ओके ऑप्शन सी होची हमर करेक्ट आंसर देन हम देखिबा हु ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा रो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन किए एमान को मध्यरु प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर स्पीकर ऑफ लोकसभा एमान को मध्यरु करेक्ट आंसर रे जीवन कोन वाइस प्रेसिडेंट ओके ऑप्शन बी होची हमर करेक्ट आंसर देन हम देखिबा हाउ मेनी मेंबर कैन नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा रे प्रेसिडेंट को द्वारा केते जन मेंबर को नॉमिनेट करा जायता है तो राज्यसभा रो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होची केते 250 तो सेदी मध्यरु राष्ट्रपति को द्वारा 12 जन नॉमिनेट होइतांती राष्ट्रपति के द्वारा 12 जन नॉमिनेट होइतांती आउ 238 टा मेंबर होची से माने इलेक्टेड होइतांती ऑप्शन सी होची हमर करेक्ट आंसर हे जो देन हम देखिबा राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव फ्रॉम फंडामेंटल राइट बाय व्हिच अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी को क्यों अमेंडमेंट माने क्यों अमेंडमेंट रे रिमूव कर दिया जायछि सेटा होछि 44 अमेंडमेंट रे ओके सोशलिस्ट हेगला किंबा सेकुलर हेगला सेटा 42 अमेंडमेंट रे हमरो ऐड कर दिया जायछि केबे सेटा होछि 1976 रे ऐड कर दिया जायछि तो एटारे करेक्ट आंसर रे जिबा हमर कोन 44 अमेंडमेंट हे जिवो ओके आउ अमेंडमेंट 101 रे हमर कोन मनी बिल संपर्क रे मेंशन कर दिया जायछि ओके देन हम देखबा which article guarantee the right to constitutional remedy right to constitutional remedy जो होची सेटा होची आर्टिकल 32 रे मेंशन होची ओके आउ राइट टू पर्सनल लाइफ सेटा होची आर्टिकल 21 रे मेंशन होची राइट टू फ्रीडम होची सेटा होची हमरो आर्टिकल 19 रे मेंशन होची राइट टू इक्वालिटी होची सेटा होची आर्टिकल 14 ओके देन हम देखिबा तला हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट तो सेटा होची हमर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंडिया चीफ जस्टिस को द्वारा शपथपात कराइतांती ओके ऑप्शन सी होची हमर करेक्ट आंसर रे जिवो द नॉर्मल टर्म ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट रो गवर्नर मानकर नॉर्मल टर्म केते 5 इयर्स ओके ऑप्शन बी होची हमर करेक्ट आंसर क्वेश्चन पतला हु एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया if both the president and vice president are unavailable तो एमान को मध्यरु करेक्ट आंसर होची
एमानक मध्य करेक्ट आंसर है जिमार कोन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओके ऑप्शन बी होची हमरो करेक्ट आंसर व्हिच आर्टिकल डील विथ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस कमिशन के आर्टिकल को डील करछि सेटा होची हमरो 280 ओके आर्टिकल 280 ऑप्शन ए होची हमरो करेक्ट आंसर द एंटी डिफेक्शन लॉ इज कंटेन इन व्हिच शेड्यूल रे मेंशन अछि आर्टिकल सॉरी 10th शेड्यूल रे मेंशन अछि एंटी डिफेक्शन लॉ संपर्क रे जदि लैंग्वेज संपर्क जे पचारतांता सेटा होची आर्टिकल माने शेड्यूल 8 रे मेंशन अछि जदि लैंड रेवेन्यू सिस्टम कोठे दे जाछि सेटा होची शेड्यूल 9 रे मेंशन जदि पंचायत राज संपर्क रे जदि पचारतांता सेटा होची शेड्यूल 11 रे मेंशन अछि ओके एमान को मध्य करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी देन हम किबा व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन which part of the constitution deal with fundamental right होची कोटा को पार्ट सहित डील करूची सेटा होची हमरो पार्ट 3 ओके फंडामेंटल राइट होची पार्ट 3 फंडामेंटल ड्यूटीज होची पार्ट आईबी और आईबीएम ओके आ डीएसपी होची सेटा होची पार्ट आईबी ओके फंडामेंटल ड्यूटीज होची पार्ट आईबी ऑप्शन सी होची हमरो करेक्ट आंसर देन हम देखबा हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर करेंटली लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन तो फंडामेंटल ड्यूटीज होची हमरो केतरा रहिची 11टा ऑप्शन सी होची हमरो करेक्ट आंसर ए बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द मनी बिल इंट्रोड्यूस करा जाए सेटा होची राज्यसभा रे लोकसभा रे बोथ हाउसेस रे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग रे लोकसभा रे ओके मनी बिल इंट्रोड्यूस करा जाए क्वेश्चन देला वो डिसाइड whether a मनी बिल और नॉट का द्वारा डिसाइड करा जाता है गोटे मनी बिल किंबा नुह बोली का द्वारा डिसाइड करा जाता है स्पीकर ऑफ लोकसभा स्पीकर द्वारा मनी बिल को डिसाइड करा जाता है ऑप्शन सी होची हमरो करेक्ट आंसर देन हम देखिबा व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एमान को मध्य करेक्ट आंसर है जीव कोन 368 ओके 368 देन हम देखिबा द कांसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बोरो फ्रॉम जुडिशियल रिव्यूटा को कंट्री रु बोरो करा जायछि ओके जुडिशियल रिव्यू सेटा होछि हमरो यूएसए रु बोरो करा जायछि ओके आ कनकरेंट लिस्ट सेट कनकरेंटटा सेटा होछि हमरो ऑस्ट्रेलिया रु बोरो करा जायछि ओके क्वेश्चन पचला द पावर टू इश्यू राइट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट रेस्ट विथ एमान को मध्य करेक्ट आंसर है कौन सुप्रीम कोर्ट ओनली ना हाई कोर्ट ओनली ना बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट तो एमान को मध्य करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ओके देन हम देखिबा क्वेश्चन पचारला व्हिच द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया रो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कोटा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ओके अटॉर्नी जनरल होची हमरो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इंडिया रो ओके देन हम देखिबा क्वेश्चन पचारला क्वेश्चन देला ग्राम पंचायत इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय ग्राम पंचायत इलेक्शन का द्वारा कंडक्ट करा जाता है एमान को मध्य करेक्ट आंसर होची स्टेट इलेक्शन कमिशन द्वारा हमरो ग्राम पंचायत इलेक्शन टा कंडक्ट करा जाता है ओके ऑप्शन बी होची हमरो करेक्ट आंसर बुझा पड़ुची देन हम देखिबा क्वेश्चन पचारला राइट टू एजुकेशन वाज मेड ए फंडामेंटल राइट अंडर व्हिच आर्टिकल राइट टू एजुकेशन टा फंडामेंटल राइट अंडर रे को आर्टिकल रे जाउची सेटा होची आर्टिकल 21 ए ओके ऑप्शन हमरो सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इज प्रेसाइड ओवर बाय जॉइंट सिटिंग टा का द्वारा डिसाइड करा जाता है पार्लियामेंट रे सेटा होची स्पीकर ऑफ लोकसभा ओके लोकसभा स्पीकर द्वारा हमरो जॉइंट सिटिंग टा प्रेसाइड करा जाए जॉइंट सिटिंग को ओके देन हम देखिबा क्वेश्चन पचला व्हिच शेड्यूल कंटेन द लिस्ट ऑफ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज इन इंडिया तो सेटा होची शेड्यूल 8 रे मेंशन कर दिया जायछि आ शेड्यूल 7 रे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर स्टेट पावर आ सेंट्रल पावर आ बहुत होची कंकरेंट लिस्ट सेटा होची हमर कोन शेड्यूल 7 रे मेंशन होची ना रेवेन्यू सिस्टम कोठे दिया जायछि सेटा होची शेड्यूल 9 रे आ वांटी सेटा होची शेड्यूल 10 रे आ लैंग्वेज क्वेश्चन पचला द आइडिया फास्ट पुट फॉर तो आइडिया के देतिले कॉन्स्टिट्यूट असेंबली रो एमान को मध्य करेक्ट आंसर होची हमर कोन देन हम देखिबा क्वेश्चन पचला द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज फिक्स
मैक्सिमम स्ट्रेंथ केते लोकसभा मैक्सिमम स्ट्रेंथ होउची हमरो 550 ओके ऑप्शन बी होउची हमरो करेक्ट आंसर आ राज्य देन पचार देन देखिबा पचारला अंडर व्हिच आर्टिकल तो एमान को मध्यरु करेक्ट आंसर ता कोन करेक्ट स्टेट लेजिस्लेचर एस्टैब्लिश ता संपर्क मेंशन 168 देन हम देखिबा द टोटल नंबर ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया इज करेंटली आमर करेंटली केतरा स्टेट अच्छी आउ केतरा यूनियन टेरिटरी अच्छी एमान को मध्यरु करेक्ट आंसर होउची हमरो 28टा स्टेट रहिची आउ 8टा यूनियन टेरिटरी रहिची ऑप्शन ए होउची हमरो करेक्ट आंसर which right is issued by the court to inquiry into the legality of a person claim to a public office एमान को मध्यरु करेक्ट आंसर ता कोन करेक्ट आंसर होउची हमरो क्वारो आरंटो ओके ऑप्शन सी होउची हमरो करेक्ट आंसर देन पचारला हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्टेट रो चीफ मिनिस्टर का को अपॉइंट करता है गवर्नर को ना प्राइम मिनिस्टर को ना प्रेसिडेंट को ना हमरो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रो चीफ जस्टिस मान को ना स्टेट रो चीफ मिनिस्टर हमरो गवर्नर को अपॉइंट करता है ऑप्शन सी होउची हमरो करेक्ट आंसर देन हम देखबा क्वेश्चन पचारला judicial form the executive is enjoyed by होउची ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ओके बी होउची हमरो करेक्ट आंसर आर्टिकल 50 रे मेंशन अछि तार देन हम देखिबा हां डीपीएसपी रा सेटा अछि आयरलैंड रो करा जायछि देन हम देखिबा क्वेश्चन पतला द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर्म इन इंडिया एमान को मध्यरु करेक्ट आंसर ता कोन द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर्म इन इंडिया तो सेटा होउची हमरो कोन आंध्र प्रदेश ता होउची हमरो कोन फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ओके देन हम देखिबा क्वेश्चन पतला तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इज ए तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इज ए गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ना एनजीओ ना हमरो एग्जीक्यूटिव बॉडी हमरो नेशनल कमीशन गोटे सेटा होउची हमरो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑप्शन बी होउची हमरो करेक्ट आंसर देन हम देखिबा क्वेश्चन पतला व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ द यूनियन टेरिटरी रे को पार्ट ता डील करिछि एमान को मध्यरु करेक्ट आंसर होउची हमरो कोन करेक्ट आंसर होउची पार्ट 8 ओके पार्ट 8 होउची हमरो डील करिछि ऑप्शन सी होउची हमरो करेक्ट आंसर देन हम देखिबा क्वेश्चन पतला व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल amendment lower the voting age from 21 to 18 years तो एमान को मध्यरु व्हिच वन इज करेक्ट सेटा होची हमरो कोन 21 वर्ष थिला सेटा होची 18 वर्ष करि दिया जायछि भोट देबार अधिकारटा सेटा होची 61 अमेंडमेंट ओके 19 हमरो 86 रे मेंशन करि दिया जाय माने 1986 रे 61 अमेंडमेंट रे सेटा हमरो को जायछि देन हम देखिबा क्वेश्चन देला सरकारिया कमिशन वाज सेट अप टू रिव्यू सरकारिया कमिशन टू रिव्यू करा जायतिला सेटा होची हमर कोन तो सेटा होची सेंट्रल सेंटर आ स्टेट रिलेशनशिप रिव्यू करतिला ओके ऑप्शन ए होची हमर करेक्ट आंसर देन हम देखिबा क्वेश्चन पतला इन द इंडियन पार्लियामेंटरी सिस्टम वोट ऑन अकाउंट इज वैलिड फॉर हाउ मेनी मंथ तो एमान को मध्यरु करेक्ट आंसर ता कोन वोट ऑन अकाउंट इज वैलिड फॉर हाउ मेनी मंथ सेटा होची ऑप्शन बी होची हमरो करेक्ट आंसर 2 मंथ ओके 2 मंथ देन हम के वाट मेंशन कर दिया जायछि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ सेटा होची आर्टिकल 21 रे मेंशन कर दिया जायछि ओके राइट टू फ्रीडम होची आर्टिकल 19 रे मेंशन कर दिया जायछि ओके 14 रु 8 सेटा होची राइट टू इक्वालिटी संपर्क रे मेंशन कर दिया जायछि आ एमान को मधुर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी होची हमरो करेक्ट आंसर ओके रिटायर एट द एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इयर्स जदि हाई कोर्ट रो जज सेटा होची 62 इयर्स ओके देन हम देखिबा क्वेश्चन पतरला हु अमंग द फॉलोइंग कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट विदाउट बीइंग ए मेंबर एमान को मधुर करेक्ट आंसर होची अटॉर्नी जनरल ओके ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड अंडर व्हिच आर्टिकल तो एमान को मधुर करेक्ट आंसर होची हमर कोन
आर्टिकल 148 होउची देन हमर देख इनश्योर इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ सेटा होउची हमर आर्टिकल 14 रे मेंशन अछि। ओके देन हम देखिबा क्वेश्चन पतारला द मेंशन अछि। ऑप्शन सी होउची हमर करेक्ट आंसर। आउ एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी सेटा होउची आर्टिकल 17 रे मेंशन अछि। आउ एवोल्यूशन ऑफ इक्वालिटी सेटा होउची रेवोल्यूशन ऑफ टाइटल सेटा होउची हमरो आर्टिकल 18 रे मेंशन अछि। राइट टू फ्रीडम सेटा होउची आर्टिकल 19 रे मेंशन अछि। ओके एमान को आंसर होउची ऑप्शन सी आर्टिकल 18। ओके एवोल्यूशन ऑफ टाइटल देन हम देखिबा व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी सेटा होउची हमरो आर्टिकल 21 रे मेंशन अछि। देन हम देखिबा क्वेश्चन पचार द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन्स एज 6 to 14 years इज इन सेंड इन एमान को मधुर करेक्ट आंसर कोन 6 ରୁ 14 वर्ष पिला मानको केमती फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करबा सेटा होची को आर्टिकल रे मेंशन अछि। आर्टिकल सेटा होची 21 ए रे मेंशन अछि। ओके आर्टिकल 21 ए रे देन हम देखिबा क्वेश्चन पतला व्हिच आर्टिकल डायरेक्ट द स्टेट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत तो एमान को मधुर करेक्ट आंसर होची हमर कोन करेक्ट आंसर होची आर्टिकल 40। ओके आर्टिकल 40 रे मेंशन अछि। देन हम देखिबा क्वेश्चन पतला द प्रोविजन फॉर ए यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन इज मेंशन इन तो सेटा होची हमर कोन आर्टिकल 44 रे मेंशन अछि। ओके सेपरेशन ऑफ द जुडिशियल पावर द एग्जीक्यूटिव इज डायरेक्टेड अंडर व्हिच आर्टिकल तो एमान को मधुर करेक्ट आंसर ता कोन आर्टिकल 50 रे मेंशन अछि। देन हम देखबा ऑफ इंडिया एमान को मधुर करेक्ट आंसर ता कोन सेटा होची आर्टिकल 52 रे इंडिया रो प्रेसिडेंट मान को संपर्क मेंशन अछि। ऑप्शन ए होची हमरो ओके टिक मेंशन अछि। आर्टिकल 112 ऑप्शन सी होची हमरो करेक्ट आंसर। देन हम देखबा क्वेश्चन पतरला व्हिच आर्टिकल ग्रांट द प्रेसिडेंट द पावर टू promulgate ordinance during the recess करेक्ट आंसर होची हमरो आर्टिकल 123। ओके आर्टिकल 123 रे मेंशन अछि। हां जे माने न्यू आपरी विजिट करथिले चैनल को त्यापरू को सब्सक्राइब कर दियो मु जाबळ रे जे भी वीडियो अपलोड करबी तो आपण माने सर्वप्रथम पाई परिबे। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड अंडर एमान को मधुर करेक्ट आंसर होची 148 आर्टिकल। देन हम देखबा व्हिच आर्टिकल डील विथ द क्रिएशन और एवोल्यूशन आंसर होची 169। ओके ऑप्शन बी होची हमरो करेक्ट आंसर। देन हम देखबा क्वेश्चन पताला द पावर ऑफ द गवर्नर टू promulgate ordinance is given एमान को मधुर करेक्ट आंसर होची आर्टिकल 2। देन हम देखबा क्वेश्चन पताला अंडर व्हिच आर्टिकल कैन हाई कोर्ट इश्यू राइट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट तो आर्टिकल 226 रे मेंशन कर दिया जायछि। ऑप्शन सी होची हमरो करेक्ट आंसर। कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर व्हिच आर्टिकल फाइनेंस कमिशन सेटा होची हमर आर्टिकल 280 रे मेंशन अछि। ऑप्शन सी होची हमरो करेक्ट आंसर। व्हिच आर्टिकल गारंटी द राइट टू प्रॉपर्टी एज ए लीगल राइट तो राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया जायछि सेटा होची रिमूव करी हमरो 300 आर्टिकल लीगल वे रे रखा जायछि। ऑप्शन बी होची हमरो करेक्ट आंसर। देन हम देखिबा द पब्लिक सर्विस कमिशन फॉर यूनियन एंड फॉर द स्टेट आर एस्टैब्लिश अंडर तो एमान को मधुर करेक्ट आंसर होची 315 ऑप्शन बी होची हमरो करेक्ट आंसर 315 आर्टिकल। ओके
The public service commission for the union and for the state are under established. Then हम देखिबा election to the Lok Sabha and state assembly are based on adult suffrage under. करेक्ट आंसर होची हमर कोन आर्टिकल 326 रे मेंशन अछि. देन हम देखिबा क्वेश्चन देला the failure of constitutional machinery in a state is deal with order. एमान को मधुर करेक्ट आंसर होची आर्टिकल 356 रे मेंशन अछि. देन हम देखिबा क्वेश्चन पचरला which article give special provision for the administration of scheduled area or tribal area. एमान को मधुर which one is correct है correct होची हमरो 244 article. ओके 244 article रे मेंशन अछि special provision for the administration of scheduled area or tribal area ता संपर्क रे मेंशन अछि आर्टिकल 244 रे. देन हम देखिबा क्वेश्चन पचरला which amendment added the 9th schedule to the constitution to protect land reform law from judicial review. एमान को मधुर करेक्ट आंसर होची हमरो कोन ना करेक्ट आंसर होची हमरो अमेंडमेंट 1 जोटा कि 1951 रे मेंशन अछि. ऑप्शन ए होची हमरो करेक्ट आंसर. ओके ऑप्शन ए होची हमरो करेक्ट आंसर. देन देखिबा क्वेश्चन पचला द recognition of state on a linguistic basis was implemented by which amendment. करेक्ट आंसर होची 7th amendment 1956. ओके 7th amendment 1956. ओके ऑप्शन बी होची हमरो करेक्ट आंसर. देन हम देखिबा क्वेश्चन पचला which constitutional amendment is obtained referred to as the mini constitution. तो आर्टिकल 42 1976. ओके मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42 अमेंडमेंट. ओके 1976. ऑप्शन बी होची हमरो करेक्ट आंसर. द वर्ड सोशलिस्ट आउ सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वेर एडेड टू द प्रीएम्बल बाय अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट रे सोशलिस्ट आउ सेक्युलर आउ इंटीग्रिटी को ऐड कर दिया जायछि 1976 रे. ओके ऑप्शन बी होची हमरो करेक्ट आंसर. प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया जायछि साउची आर्टिकल सॉरी अमेंडमेंट 44 अमेंडमेंट रे मेंशन अछि. देन हम देखिबा क्वेश्चन पतला फंडामेंटल एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑन द रिकमेंडेशन द सोरेन सिंह कमिटी बाय व्हिच अमेंडमेंट. एमान को मधुर करेक्ट आंसर होची 42 अमेंडमेंट. ओके सोरेन सिंह कमिटी बाय सेटा होची हमरो 42 अमेंडमेंट. देन हम देखिबा क्वेश्चन पतला व्हिच अमेंडमेंट रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू रिमूव कर दिया जायछि राइट टू प्रॉपर्टी को सेटा होची को अमेंडमेंट रे मेंशन अछि. सेटा होची 44 अमेंडमेंट 1978 रे मेंशन अछि. ऑप्शन बी होची हमरो करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी. ओके देन हम देखिबा क्वेश्चन पतला द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस for declaring a national emergency was replaced by armed revolution by which amendment. सेटा होची 44 अमेंडमेंट. ओके ऑप्शन सी होची हमरो करेक्ट आंसर. देन हम देखिबा क्वेश्चन पतला द एंटी डिफेक्शन लॉ was introduced by adding the 10th schedule thought which amendment. सॉरी 52 अमेंडमेंट रे 1985 रे मेंशन कर दिया माने 52 अमेंडमेंट. ओके 52 अमेंडमेंट एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इंट्रोड्यूस दिया जायतिला एडिंग कर दिया जायछि सेटा होची 1985 रे ऐड कर दिया जायछि 52 अमेंडमेंट रे. ओके 52 अमेंडमेंट रे 1985 रे ऐड कर दिया जायछि 10th शेड्यूल रे. ओके एंटी डिफेक्शन लॉ संपर्क रे. देन हम देखिबा क्वेश्चन पतरला द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 years to 18 years बाय व्हिच अमेंडमेंट. तो सेटा होची 61 अमेंडमेंट रे 1989 रे मेंशन कर दिया जायछि. ओके रिड्यूस कर दिया गला 21 years थिला
किंतु ताकू 18 वर्ष कर दिया गला भोट देवार अधिकार सेटा होची 61 अमेंडमेंट रे मेंशन अछि ओके देन हम देखिबा व्हिच अमेंडमेंट अकॉर्ड फेशियल status to the union territory of Delhi by resignation it as the national capital territory which amendment added facial status to the union territory of Delhi by designation it as the national capital territory correct answer होची हम कोन 69 amendment okay 1991 then हम देखिबा क्वेश्चन पताला द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय द पंचायत राज तो सेटा होची हमरो 73 अमेंडमेंट रे मेंशन कर दिया जाय पंचायत राज संपर्क रे आ म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन संपर्क रे which amendment relate to the municipality or local bodies and at the 12th schedule सेटा होची 74 अमेंडमेंट ओके ऑप्शन बी होची हमरो करेक्ट आंसर सेटा होची 1992 रे ऐड कर दिया जाय राइट टू एजुकेशन वाज मेड ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A बाय व्हिच अमेंडमेंट 86 अमेंडमेंट 2002 ओके ऑप्शन बी होची हमरो करेक्ट आंसर देन हम देखिबा क्वेश्चन पतला द 11 फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू ए चाइल्ड वाज एडेड बाय करेक्ट आंसर होची हमरो 86 अमेंडमेंट ओके 2002 रे ऐड कर दिया जाय ओके द साइज ऑफ द काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर टू 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा स्टेट असेंबली सेटा होची 91 अमेंडमेंट ओके 2003 रे ऐड कर दिया जाय तो क्वेश्चन पचला तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब वाज क्रिएटेड एज ए सेपरेट बॉडी बाय व्हिच अमेंडमेंट को अमेंडमेंट रे क्रिएट कर दिया जाय नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ता सेपरेशन बॉडी तो सेटा होची हमरो 89 अमेंडमेंट ओके 2003 रे ऑप्शन ए होची हमरो करेक्ट आंसर देन हम देखिबा क्वेश्चन पतला व्हिच अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन एंड स्टेटस टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज सेटा होची 97 अमेंडमेंट 2011 रे 97 अमेंडमेंट ओके अमेंडमेंट रे हमर कॉन्स्टिट्यूशनल टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज ता संपर्क मेंशन अछि देन हम देखिबा क्वेश्चन ratified by which amendment तो सेटा होची 100 अमेंडमेंट रे मेंशन अछि ओके ऑप्शन बी होची हमर करेक्ट आंसर देन हम देखिबा क्वेश्चन देला द गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय सर्विस टैक्स ता केउ अमेंडमेंट रे इंट्रोड्यूस किया जायछि सेटा जीएसटी ता ओके 2017 फर्स्ट अप्रैल रे हमर जीएसटी लागू होइतिला 2016 ओके 1 अमेंडमेंट 2016 रे ओके हमर गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस दिया जायतिला देन हम देखिबा क्वेश्चन पतला which amendment granted constitutional status to the national commission for backward classes क्यों अमेंडमेंट रे हमरो ग्रांटेड करा जायतिला नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस मानको तो सेटा होची हमरो 102 अमेंडमेंट रे 2018 रे हमरो ग्रांटेड करा जायतिला ऑप्शन बी होची हमरो करेक्ट आंसर देन हम देखिबा ए 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन गवर्नमेंट जॉब एंड एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस बाय 10% हमर रिजर्वेशन रहिबो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन मानको ओके जॉब क्षेत्र रे किबा एजुकेशन क्षेत्र रे सेटा होची को अमेंडमेंट रे मेंशन कर दिया जायछि सेटा होची हमर कोन 103 अमेंडमेंट रे मेंशन कर दिया जायछि ओके ऑप्शन बी होची
देन हम देखिए क्वेश्चन पता which amendment extend the reservation of seat for SC out assemblies but suggests the nomination of Anglo-Indian. करेक्ट आंसर होउछ हमरो कोन 104th amendment मेंशन अछि. देन हम देखिबा द 105th amendment act 2021 is related to. तो सेटा होची restoring restoring state power to identify socially and economically backward classes ता संपर्क में मेंशन अछि. ओके हमरो 105 अमेंडमेंट रे क्वेश्चन पतला द हिस्टोरिक नारी शक्ति बंध अभिनियम providing 33 reservation for women in the Lok Sabha assemblies was first which amendment. करेक्ट आंसर होची 106 अमेंडमेंट. ओके ऑप्शन डी होची हमरो करेक्ट आंसर. देन हम देखिबा क्वेश्चन पतला which amendment added Bodo, Dogri, Maithili and Santali language to 8th schedule of the constitution. तो एमान को मध्य करेक्ट आंसर होची हमरो कोन सेटा होची हमरो 8th schedule रे ऐड कर दिया जायछि. ओके 92 अमेंडमेंट रे. ओके ऑप्शन सी होची हमरो करेक्ट आंसर. Then हम देखिबा what is the minimum attendance required to trans 1/10. Okay 1/10 of the total membership. Okay option B होची हमरो करेक्ट आंसर. हम होची हमरो 1/10 of the total membership. Then हम देखिबा क्वेश्चन पतरला what type of question is parliament required or oral answer allowing supplementary question to follow. एमान को मध्य करेक्ट आंसर कोन स्टारेड क्वेश्चन. ओके ऑप्शन बी होची हमरो करेक्ट आंसर. देन हम देखिबा ऑन स्टारेड क्वेश्चन इज पार्लियामेंट रिक्वायर्ड. तो सेटा होची हमरो रिटन आंसर द नो रूम फॉर सप्लीमेंटरी क्वेश्चंस. ऑप्शन बी होची हमरो करेक्ट. देन हम देखिबा a bill passed by the Lok Sabha but pending in the Rajya Sabha will lapse if सेटा होची लोकसभा डिसबल करता है यदि पेंडिंग रहिला लोकसभा द्वारा डिसबल करा जाता है. ओके लोकसभा स्पीकर बिलटा मनी बिल. ओके देन देखिबा which of the following does not love upon the dissolution of the Lok Sabha. correct answer in the हमरो पास हुए नहीं. ओके dissolution of the Lok Sabha और बिल does not लाभ होता है. ओके ऑप्शन ए होची हमरो करेक्ट आंसर. देन हम देखिबा क्वेश्चन जब over an ordinary bill is resolved by which type of majority. full majority of member of both house present and voting. Okay ऑप्शन बी होची हमरो करेक्ट आंसर. इन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट हमरो डेड लॉक कवर होता है ऑर्डिनरी बिलटा रिजर्व करा जाते उस टाइप ऑफ सेटा मेजॉरिटी सेटा होची हमरो कोन सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द बोथ हाउस. क्वेश्चन पचारा देयर इज नो जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इन केस ऑफ सेटा होची हमरो मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिलटा. ओके मनी बिल आउ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होची
no provision for a joint sitting of parliament in the cases. Option B correct answer. Which scenario? तो एमानक मध्य करेक्ट आंसर होउछ हमर कोन ऑप्शन सी इन द इवेंट ऑफ an equality of both. Okay, option C होउछ हमर करेक्ट आंसर. ओनली व्हिच सिनेरियो थाए सेटा होउछ हमर इवेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ बोथ सिनेरियो हमर रहता है. ऑप्शन सी होउछ हमर करेक्ट आंसर. व्हिच पार्लियामेंट कमिटी कन्सिडरली तो सेटा होउछ हमर केउ पार्लियामेंट कमिटी हमर एंटर करते मेंबर ऑफ लोकसभा रे सेटा होउछ हमर कोन एस्टिमेट कमिटी. इट हैज 30 मेंबर्स ऑल फ्रॉम द लोकसभा. ओके, देन हम देखिबा व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी रे. टोटल स्ट्रेंथ केते 15 फ्रॉम लोकसभा रे आ 7 जन हमर राज्यसभा रे. ओके, पब्लिक अकाउंट कमिटी रे 7 जन मेंबर तांती. ओके, तो लोकसभा रे 15 जन आ राज्यसभा रे 7 जन. ओके, पब्लिक अकाउंट कमिटी रे. ऑप्शन बी. क्वेश्चन पतला द committee is appointed by the speaker and invariably chosen from. तो सेटा होछ हमर अपोजिशन पार्टी चूजन करता है. अपोजिशन पार्टी. ओके, पब्लिक अकाउंट कमिटी अपॉइंट करता है स्पीकर द्वारा अपॉइंट करा जाए आ इनवेरिएबली चूजन करता है. सेटा होछ हमर का द्वारा चूजन करा जायते से होछ अपोजिशन पार्टी द्वारा चूजन करा जाए. ऑप्शन बी होछ हमर करेक्ट आंसर. हु होल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू prorogue a session of the parliament. तो एमन को मध्य करेक्ट आंसर होछ हमर कोन प्रेसिडेंट ऑफ ऑप्शन सी होछ हमर करेक्ट आंसर. हु होल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू prorogue सेशन ऑफ द पार्लियामेंट सेशन को पावर को परलगु करता है सेटा होछ हम का द्वारा सेटा होछ हमर इंडिया रो प्रेसिडेंट को द्वारा हमर पावर टा हाउस फॉर द a specific time terminating a sitting of the house for a specific time house hour day week is called adjournment and is done by. Correct answer which is the presiding officer of the house speaker either amar chairman. Okay, option B होची amar correct answer. Option B. then हम देखिबा a no confidence motion can be introduced and removed only in the no confidence motion. तो जॉइंट सिटिंग ऑफ सेटा होची जॉइंट सेशन पार्लियामेंट बा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल लोकसभा राज्यसभा लोकसभा रे. ओके, ऑप्शन बी होची हमर करेक्ट आंसर. नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस एंड मूव ओनली इन द लोकसभा टू बी admitted and discussed in the Lok Sabha. No confidence motion require the backing of at least how many member? 15 members. Okay, option B होची हमर करेक्ट आंसर. तेरा हम देखबा क्वेश्चन पतला what happen if the mandatory motion of thanks on the president address is defeated in the Lok Sabha. तो सेटा होची it amount to the defeat of the government and the ministry must resign. ऑप्शन सी होची हमर करेक्ट आंसर. देन हम देखबा अंडर आर्टिकल 249 तो राज्यसभा कैन पास ए रेजोल्यूशन empowering parliament to make law on a subject in the state list in the. तो सेटा होची नेशनल इंटरेस्ट रे. ऑप्शन ए होची हमर करेक्ट आंसर. देन हम देखबा क्वेश्चन पतला which house has the exclusive power under article 312 to recommend the creation of a new all India services. सेटा होची राज्यसभा. ऑप्शन बी होची हमर करेक्ट आंसर. A money bill can be introduced in the Lok Sabha only on the prior recommendation.
स्पीकर सॉरी आमर ऑप्शन सी हूँ आमर करेक्ट आंसर का रिकमेंडेशन रे मनी बिलटा इंट्रोड्यूस करा जाए और लोकसभा रे सेटा हूँ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑप्शन सी हूँ आमर करेक्ट आंसर देन हम देखा क्वेश्चन पचरा ए ऑर्डिनेंस promulgated by the president will parliament is in recess must be approved within how many week from its regimen मान को करेक्ट आंसर 2 वीक रे हमर 3 वीक रे 4 वीक रे 6 मंथ रे हमर 6 वीक रे ओके ऑप्शन सी होछ हमर करेक्ट आंसर देन हम देखबा व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल टाइम गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सेशन ऑफ पार्लियामेंट रे माने दुटा सेशन होता है कंसेक्यूटिव सेशन होता है पार्लियामेंट रे मैक्सिमम हमर परमिसिबल टाइम केते रहता है 6 मंथ 2 मंथ 4 मंथ 12 मंथ मान करेक्ट आंसर होची हमर कोन 6 मंथ देन हम देखबा क्वेश्चन पतला द पॉलिटिकल ऑफिस रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लोर डिसिप्लिन इज बेस्ड ऑन सेटा होची हमर पार्लियामेंटरी कन्वेंशन एंड रूल ऑफ द हाउस ऑप्शन डी होची हमर करेक्ट आंसर देन हम देखबा क्वेश्चन पतला टू बी ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन आइदर हाउस ए पॉलिटिकल पार्टी मस्ट secure at least तो एमान को मध्य कर 10th total of the seat okay 10th total of 10% of the total seat option B होची हमर करेक्ट आंसर if a dialogue occur between the legislative assembly and legislative council of state of or ultimately otherwise the counseling option C होची हमर करेक्ट आंसर then हम देखबा what is the maximum total period of which a state legislative counseling delay an ordinary bill passed by the assembly तो सेटा होची 4 मास भितरे जोटा कि 3 month in the first instant and 1 month in the second instant रे what is the maximum period of the state legislative counseling can retain or delay a money bill 14 दिन भितर ऑप्शन ए होची हमर करेक्ट आंसर 14 दिन हमर डिले होता है लोकसभा रु राज्यसभा मनी बिलटा मैक्सिमम पीरियड देन हम देखबा क्वेश्चन पत्रला ए टोकन कट motion during budget discussion M2 for a grant by सेटा होची हमर आरएस ऑप्शन सी होची हमर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी a policy court motion indicate complete disapproval of the underlying policy and aim to reduce the demand of a grant to मान को करेक्ट आंसर होची हमर कोन ऑप्शन ए आंसर ऑप्शन ए देन हम देखबा इन पार्लियामेंटरी टर्मिनोलॉजी व्हाट डज द टर्म गुल्टनिंग मीन्स कोन सेटा होची पुटिंग ऑल रिमेनिंग ऑन डिस्कस डिमांड फॉर ग्रांट टू बट टुगेदर ड्यू टू लैक ऑफ टाइम ऑप्शन सी होची हमर करेक्ट आंसर देन हम देखबा द vote on account allow the government to withdraw fund from the consolidated fund of Indian to cover expenditure for सेटा होची हमर ऑप्शन बी होची हमर करेक्ट आंसर द पीरियड बिफोर द पासिंग ऑफ द रेगुलर बजट ओके ऑप्शन बी होची हमर करेक्ट आंसर देन देखबा क्वेश्चन देला which specific bill give legal authority to the government to withdraw money from the consolidated fund of India after the budget demand are vote on
तो सेटा होची एप्रोप्रिएशन बिल ओके ऑप्शन बी होची हमर करेक्ट आंसर डज द prorogation of house affect the bill pending before it no pending bill do not lap can be carried over the next session option B होची हमर करेक्ट आंसर देन हम देखबा वाज द अथॉरिटी टू डिसॉल्व द राज्यसभा डिसॉल्व करता है राज्यसभा अथॉरिटी एमानक मध्य करेक्ट आंसर होची हमर कोन 22 प्राइम मिनिस्टर कैन बी डिसॉल्व एट द परमानेंट बॉडी ऑप्शन डी होची हमर करेक्ट आंसर voting in parliament indirectly not allowed on which category of expenditure तो सेटा होची एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ऑप्शन बी होची हमर करेक्ट आंसर वो अपॉन द स्पीकर प्रोटन ऑफ द लोकसभा ऊपर सेटा ऊपर द फास्ट सिटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्शन हाउस तो सेटा होची हमर कोन द हमर मध्य करेक्ट आंसर हे जो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट करा जाए स्पीकर प्रोटन ऑफ द लोकसभा वो प्रेसिडेंट ऑफ द फास्ट सिटिंग ऑफ न्यूली इलेक्टेड हाउस प्रोटन स्पीकर ऑप्शन सी होची हमर करेक्ट आंसर तो डेट ऑफ इलेक्शन फॉर द डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा इस सभा ऑप्शन सी होची हमर करेक्ट आंसर देन हम देखबा क्वेश्चन पतला टू लोकसभा रो स्पीकर रेजिग्नेशन लेटर का देते हैं एड्रेस देयर रेजिग्नेशन लेटर होता है किंतु रेजिग्नेशन डिप्टी स्पीकर को देता है ऑप्शन सी आंसर ऑप्शन सी ओके देन हम देखबा रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा मस्ट बी पासड करेक्ट आंसर होची मेजॉरिटी वोटिंग ऑप्शन ए होची हमर करेक्ट आंसर क्वेश्चन पतला कंसिडरेशन द स्पीकर ऑफ लोकसभा करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी कैन नॉट प्रेसाइड बट कैन स्पीक बट इन द फर्स्ट इंस्टेंट ऑप्शन सी होची हमर करेक्ट आंसर व्हाट डज adjournment साइनी डे दैट्स मीन कोन टर्मिनेटिंग ऑफ ए सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर एन infinite period without fixing a date for assembly option B होची हमर करेक्ट आंसर देन देखबा ए शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बाय मेंबर इन द पब्लिक इंटरेस्ट बाय गिविंग ए नोटिस शॉर्ट देन तो सेटा होची 10 क्लियर डेज रे 10 डे रे क्लियर होता है करेक्ट आंसर नॉट डेबिट or collected and no money can be withdrawn from the consolidated fund of India except by तो सेटा होची अथॉरिटी ऑफ लॉ इनैक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑप्शन सी होची हमर करेक्ट आंसर तो मैक्सिमम 10th ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद इज कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेड तो 1/10 ऑफ द टोटल 10th ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर देन हम देखबा क्वेश्चन पतला द मिनिमम 10th ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट बी लेस दैन तो 40 मेंबर्स नो लेस दैन ओके ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर देन हम देखबा क्वेश्चन पतला ए एलोकेशन ऑफ सीट in the Rajya Sabha to the various state and union territory is done on the basis of the population of the state option B होची correct answer question पतला which independent I power is responsible for drawing and adjusting the boundary of territory constitution for parliamentary election option delimitation commission option B होची correct answer then हम देखता what causes the union budget annual financial statement to be before both house of parliament every financial years का तो रिलेट करा जाता है
एमानक मध्यरु करेक्ट आंसर होची द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, इंडिया रो प्रेसिडेंट को द्वारा लीड करा जाता है। थर्ड, द फाइनेंस मिनिस्टर एक्चुअली प्रेजेंट इट ऑन देयर बी आल्फ। तो फाइनेंस मिनिस्टर भी सेटार उपस्थित थांती। तो प्रेसिडेंट को द्वारा हमरो कोन प्रेसिडेंट को द्वारा हमरो लीड करा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट इज ए लेम डक सेशन ऑफ पार्लियामेंट? लेम डक सेशन माने कौन सेटा होछ हमरो कौन लास्ट सेशनटा जोटा कि एग्जिस्टिंग लोकसभा आफ्टर न्यू लोकसभा आज बीन इलेक्टेड करा जाए। तो सेटा होछ लास्ट सेशनटा लेम डक सेशन बोली कहा जाए पार्लियामेंट रो लोकसभा रो एग्जिस्टिंग आफ्टर हमरो न्यू लोकसभा आज बीन इलेक्टेड। ओके, ऑप्शन सी होछ हमरो करेक्ट आंसर। तेर हम देखबा क्वेश्चन पतरला व्हिच आर्टिकल डिक्लेयर दैट इंडिया that is Bharat shall be union of state। आर्टिकल 1 रे मेंशन अछि। ऑप्शन ए होछि करेक्ट आंसर। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट एंड अल्टर द बाउंड्री और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट इज गिवन अंडर। तो सेटा होछि हमर आर्टिकल 3 रे मेंशन अछि। ऑप्शन आर्टिकल 3 ऑप्शन बी होछि हमर करेक्ट आंसर। देन हम देखिए क्वेश्चन पहला व्हिच आर्टिकल ग्रांट पार्लियामेंट द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। सेटा होछि आर्टिकल 11 रे मेंशन अछि। ओके, ऑप्शन डी होछि करेक्ट आंसर। द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और ग्रांट ऑफ रिलीजियस रेस caste सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ इज डिटेल्ड। तो सेटा होछि आर्टिकल 15 रे मेंशन अछि। ऑप्शन बी होछि हमर करेक्ट आंसर। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज गारंटी बाय। तो सेटा होछि आर्टिकल 16 रे मेंशन अछि। ऑप्शन बी होछि करेक्ट आंसर। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी सेटा होछि आर्टिकल 17 रे मेंशन अछि। इक्वालिटी ऑफ टाइटल सेटा होछि हमर कोन आर्टिकल 8 मेंशन अछि। आउ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल सेटा होछि आर्टिकल 32 रे मेंशन अछि। आउ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट टू फ्रीडम टू कल्चरल नॉलेज 29 ରୁ 30 संपर्क मेंशन अछि। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस सेटा होछि 25 ରୁ 28 मध्य मेंशन अछि। आउ राइट टू फ्रीडम सेटा होछि 19 ରୁ 23 मध्य मेंशन अछि। राइट टू इक्वालिटी सेटा होछि 14 ରୁ 18 मध्य मेंशन अछि। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन सेटा होछि केते 23 सेटा होछि हमर केते 23 ରୁ 24 मध्य मेंशन अछि। तेन हमर स्पेशली गारंटी अंडर व्हिच तो आर्टिकल 19 रे मेंशन अछि। ऑप्शन बी होछि हमर करेक्ट आंसर। सॉरी, ऑप्शन 1 होछि करेक्ट आंसर। ए रे सबसेक्शन 1 ए रे मेंशन अछि। व्हिच आर्टिकल प्रोहिबिट ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। तो आर्टिकल 23 रे अछि। ऑप्शन सी होछि करेक्ट आंसर। देन हम देखिबा क्वेश्चन पतला द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 years is factories mines or hazardous activities is prohibited by। आर्टिकल 24 रे मेंशन अछि। ऑप्शन सी होछि करेक्ट आंसर। देन हम देखिबा क्वेश्चन पतला व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजियस सेटा होछि हमर कोन आर्टिकल 25 ରୁ 28 मध्य मेंशन अछि। ऑप्शन ए होछि करेक्ट आंसर 25। देन हम देखिबा प्रोटेक्शन ऑफ द योर लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चरल इज प्रोवाइडिंग सेटा होछि 29 रे मेंशन अछि। देन व्हिच आर्टिकल डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोवाइड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड द टू द फॉर सेटा होछि आर्टिकल 39 क्वेश्चन पजाला द प्रोटेक्शन एंड empowerment of the environment
and safeguarding of forest and wildlife is a directive principle under Article 48 रे मेंशन अच्छे ऑप्शन बी होची हमरो करेक्ट आंसर क्वेश्चन दिला व्हिच आर्टिकल मैंडेट द स्टेट टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी सेटा होची आर्टिकल 51 रे मेंशन अच्छे ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर देन देखिबा क्वेश्चन पतला द प्रोविजन दैट there shall be a counseling of minister with the prime minister at the aid to aid the advice the president is found in article 40 74 रे मेंशन अछि सॉरी आर्टिकल 74 रे मेंशन आंसर देन हम देखबा क्वेश्चन पचरला व्हिच आर्टिकल डील विथ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया consisting of the president राज्यसभा लोकसभा सेटा होची हमर आर्टिकल 79 रे मेंशन अछि the president's power to give assent to bill passed by parliament with hold assent return them is under मनक मधुर करेक्ट आंसर कोन 1111 आर्टिकल 111 रे मेंशन अछि ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर क्वेश्चन पतरला व्हिच आर्टिकल डील विथ द एस्टैब्लिशमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर्टिकल 124 रे मेंशन अछि ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट ओन जजमेंट और ऑर्डर इज ग्रांटेड बाय आर्टिकल 137 रे मेंशन अछि ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर क्वेश्चन पचरला व्हिच आर्टिकल गवर्नर को सेटा होची आर्टिकल 153 रे मेंशन अछि गोटे स्टेट रे गोटे गवर्नर रहिबे सेटा होची हमरो आर्टिकल 153 रे मेंशन अछि द एडवोकेट जनरल ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड अंडर व्हिच आर्टिकल एडवोकेट जनरल क्यों आर्टिकल रे अपॉइंट होता है सेटा होची आर्टिकल 165 ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर देन हम देखबा द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड ऑफ द स्टेट इज एस्टैब्लिश अंडर तो सेटा होची 266 आर्टिकल ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर ऑप्शन बी देन हम देखबा व्हिच आर्टिकल एस्टैब्लिशेस द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट ऑन पर्सन्स एक्सपेंडिचर तो सेटा होची हमर कोन आर्टिकल 267 रे मेंशन अछि ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर देन हम देखबा पार्लियामेंट पावर टू क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज इज मेंशन इन तो सेटा होची हमर कोन आर्टिकल हमर 312 रे मेंशन अछि ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ओके ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर देन हम देखो क्वेश्चन पतला व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया सेटा होची 324 आर्टिकल रे मेंशन अछि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर देन हम देखबा व्हिच आर्टिकल प्रीवियसली ग्रांटेड स्पेशली ऑटोनोमस स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिफोर इट अब्रोगेशन आर्टिकल 370 रे मेंशन अछि ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर देन हम देखबा द ट्रांसफर ऑफ द बेरुबारी यूनियन टेरिटरी टू पाकिस्तान वाज फैसिलिटेटेड बाय व्हिच अमेंडमेंट अमेंडमेंट 9 ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर दादरा एंड नगर हवेली वेर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंडियन यूनियन ऑफ द 10th अमेंडमेंट 1961 ओके ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर गोवा डामन दीव एंड वेर एडेड एज ए यूनियन टेरिटरी बाय व्हिच अमेंडमेंट गोवा डामन दीव सेटा होची हमरो अमेंडमेंट 12 रे मेंशन अछि ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर देन हम देखबा व्हिच अमेंडमेंट इलेक्टेड द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जज फ्रॉम 60 to 62 इयर्स सेटा होची 15 अमेंडमेंट रे मेंशन अछि ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर Siddhi was the first language to be added to the age schedule post-independence through the correct answer होची 21 amendment
ओके ऑप्शन ए हूँ आमर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 21 अमेंडमेंट व्हिच अमेंडमेंट explicitly state the parliament has the power to amendment any part of the constitution including fundamental right तो 24 अमेंडमेंट ऑप्शन ए हूँ करेक्ट आंसर देन देखा द प्रिवी पोर्से एंड प्रिविलेज ऑफ फॉर्मर रूल ऑफ प्रिंसली स्टेट वेयर abolished by ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर 26 अमेंडमेंट ओके ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर व्हिच अमेंडमेंट इंक्रीज द नंबर ऑफ लोकसभा सीट फ्रॉम 525 टू 545 तो सेटा हूँ आमर 31 अमेंडमेंट ओके ऑप्शन ए हूँ करेक्ट आंसर सिक्किम वाज मेड ए फुली फ्लैगेड स्टेट ऑफ ए इंडियन यूनियन बाय द ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 36 अमेंडमेंट ओके ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर व्हिच अमेंडमेंट रिप्लेस द इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर बिहाइंड द स्क्रूटिनी ऑफ द जुडिशियरी तो सेटा हूँ 39 अमेंडमेंट रे मेंशन अच्छे ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश वाज ग्रांटेड फुल स्टेटहुड बाय व्हिच अमेंडमेंट सेटा हूँ 55 अमेंडमेंट ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर व्हिच अमेंडमेंट conferred statehood on Goa separation it's from Daman and Diu that is correct answer होउछ हमरो ऑप्शन सी 56 अमेंडमेंट ओके the authoritative text of the Indian constitution in the Hindi language was provided for by Anita तो सेटा होउछ 58 अमेंडमेंट ओके ऑप्शन बी होउछ करेक्ट आंसर देन हम देखबा व्हिच अमेंडमेंट प्रोवाइड फॉर ए मल्टी मेंबर नेशनल कमिशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब तो सेटा होउछ कोन 65 अमेंडमेंट रे मेंशन अछि ओके 65 अमेंडमेंट ओके ऑप्शन बी होउछ करेक्ट आंसर कोनकानी मणिपुरी एंड नेपाली वेर एडेड टू द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द व्हिच अमेंडमेंट रे मेंशन अछि सेटा तो सेटा होउछ 71 अमेंडमेंट रे मेंशन अछि ऑप्शन बी होउछ करेक्ट आंसर व्हिच अमेंडमेंट एक्सटेंडेड द फ्रीजेज ऑन द एडजस्टमेंट ऑफ सीट इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अप टू द ईयर 2026 करेक्ट आंसर होउछ 84 अमेंडमेंट ऑप्शन ए होउछ करेक्ट आंसर consequential seniority in the case of promotion for SC and ST in government service was provided by तो सेटा होची 85 अमेंडमेंट रे मेंशन अछि तो प्रमोशन फॉर SC एंड ST गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करबार consequential केस संपर्क रे मेंशन अछि तो 85 अमेंडमेंट रे ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर व्हिच अमेंडमेंट substituted the word Odia for Oria in the 8th schedule of the Indian Constitution तो 96 अमेंडमेंट मेंशन अछि ओडियाटा ओरिया कर दिया जायछि गोटे 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे सेटा होछि हमर कोन ऑप्शन बी होछि करेक्ट आंसर 2011 रे ओडिया थिला सेटा ना सॉरी ओरियाटा ओडिया कर दिया जायछि ओके सेटा होछि 96 अमेंडमेंट ओके 2011 रे करा जायछि 96 अमेंडमेंट मेंशन अछि ओके देन हम देखबा द 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 तो हम करेक्ट आंसर होछि हमर कोन एस्टैब्लिशिंग द नेशनल जुडिशियली अपॉइंटेड कमीशन ऑप्शन सी होछि करेक्ट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज struck down entirely by the Supreme Court of India सेटा होछि 99 अमेंडमेंट struck down in 2015 Article 338A which establish a separate national commission for the schedule okay option B which correct answer then हम देखबा क्वेश्चन पतला which amendment amended
Article 19 subsection 1C to include cooperative society in the right to form association or union. तो सेटा होची 97 amendment. ओके ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर. Then think about the special provision regarding reservation of seat for the scheduled caste and scheduled tribe in the Lok Sabha was extended for another 10 years by the. तो सेटा होची 104th amendment 2020. Okay, option B होची correct answer. Under the 106 amendment, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, what fraction of seat were reserved for women in the Lok Sabha state legislative assembly. तो correct answer होची हमरो 1/3. Okay, option B होची correct answer. The National Commission for Backward Classes was granted constitutional status under Article 338 अभी थोड़ा देर. तो 102 amendment 2018 रे. ओके ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर. हाँ तो जो मानक वीडियो देखि भल लगुला लाइक गोटे कर दिंतु ता सहित चैनल रे न आथिले सब्सक्राइब गोटे गोटे कर दिंतु जहाँफल कि आपंकर से सपोर्ट आम को बहुत मोटिवेट करता है जहाँफल कि आम वीडियो आगे बन था. ओके सपोर्ट गोटे गोटे कर दिंतु. ओके सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. हैव ए ग्रेट डे. रोची बाय बाय. टेक केयर. जय जगन्नाथ.